Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short update I want to give about how to look at markets, looking at simple indicators जिसे हम कहते हैं आरएसआई को कैसे देखना है, बॉलिंजर बैंड्स को कैसे देखना है, कैसे क्लब करना है और पोजिशनल व्यू कैसे बनाना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। बट आगे बढ़ने के पहले आर दिस शॉर्ट वीडियोस दैट आई एम मेकिंग आर यूजफुल फॉर यू ऑल दैट आई मेक एंड शेयर इट अक्रॉस विद द व्यूज ऑफ द मार्केट ऑन निफ्टी एंड की लेवल जो हम ट्वीट कर रहे हैं वो अगर पसंद आते हैं आपको तो नीचे कमेंट में डालिए। दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट एंड यू आर लर्निंग आउट ऑफ दैट। तो चलिए बहुत क्विकली लेट मी स्टार्ट and share across my screen. And dosto, one thing is very important. Please understand that when you are trading in market, there is no 100% guarantee. There is no short thing. There is always risk. You have to understand and maintain a stop loss in the system, and that is very crucial if you want to trade successfully. So I'm sharing across my screen, and I'm going to teach you how to look at the correct way of applying these signs. Systematic way से apply करना है दोस्तों। एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत कम जन इसे समझते हैं। एंड एवरीवन थिंक्स कि पैसा डबल होता है, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिक वे से प्रोसेस को फॉलो करना है। ओके, एंड इवेंचुअली you have to ensure when you are making more, when you are losing less. That's the process that you have to follow, whether you're trading nifty, bank nifty, stocks, crypto, anything that you are trading. That basic concept should remain. That is very very important. So let me share my screen here, and यहाँ पर I'm sharing across. So this is a Delta Exchange platform दोस्तों, where I'm showing across how the crypto works, and the method that we are looking at right now can be applied even on crypto. So basically if you go and check simple concepts बहुत जबरदस्त काम करते हैं। यहाँ पर I'm going to go on Bitcoin and I'm looking at a daily chart. So सबसे पहले करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले चार्ट को ब्लैंक रखना है और देखना है भाई ओवरऑल हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस एंड यू हैव टू चेक ओवरऑल मार्केट में। इफ आई लुक एट इट, प्राइस हैव बीन गोइंग ऑन द अपसाइड। देयर हैज बीन, दिस इज अ KST इंडिकेटर एंड वी कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो अगर आप देखोगे ये लोअर मोमेंटम है, डाइवर्जेंस बनाया एंड प्राइसेस ने हायर हाई बनाया। So when prices make a higher high, high is above the prior high, and KST indicator made a lower high. KST is a momentum indicator, जिसे कहते हैं no sure thing. You can use RSI, you can use MACD. KST is also a very powerful indicator because it's a time cycle indicator, which I use. So time cycle indicator है and it's a powerful indicator. तो ये divergence था. Divergence only shows that the speed is reducing. इट डज नॉट इंडिकेट कि मार्केट को नीचे जाना है। रिमेंबर, अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, now you are going at a speed of 80 kilometers per hour, it shows that the speed has reduced. This has nothing to do with ki you have to take a reverse. Okay, that's what. However, with the speed reduced, now if you break the support, it's a sign gadbad hai. That is very very important. So we can see that the divergence था, speed reduce हुआ, KST moved below the zero line, daily पे सिग्नल के तरह नहीं, जीरो लाइंस के नीचे आया। and then very importantly that you have to see is that the support also here was broken. Now that's a concerning sign. That's a concerning sign. So if you're looking at this chart and you can clearly see that, let me just, so यहाँ से support break हुआ and that's a concerning sign we can see here. Post the support broken on the downside, okay? यहाँ पर this was a very sharp decline. Very sharp decline. ये कब हुआ था? When Trump announced additional tariff on China and lot of those events happened. Crypto collapsed because rare earth mineral China देता है US को, वो नहीं होगा, माइनिंग कैसे होगी, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें क्लब होके and there was a collapse. Now post that price are now still managing to go up and consolidate. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक पैटर्न बन रहा है which is known as a topping head and shoulder pattern. Can you see here? This is the head here,
This is the shoulder, this is the shoulder. It's a topping head and shoulder pattern. It will be valid once the neckline is breached again. So wait करना पड़ेगा हमें, नहीं तो valid नहीं होता. But it looks sell on rise is better for crypto as of now. Now if I go on 1 hour time frame chart, this I am talking from a more positional perspective. ठीक है, 1 hour टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके अगर मैं देखूं, वी कैन सी दैट बिटकॉइन हैज गॉन अप, नाउ शोड अ शार्प रिवर्सल, एंड इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल, we will have a classic opportunity to sell, superb opportunity to sell, and KST is already showing the negative momentum right now here. So overall if I also connect, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहां आ रहा है, मुझे लगता है यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. ठीक है, तो ये मेरा टारगेट की तरह एक्ट कर सकता है. सो दिस इज द सपोर्ट दैट कैन एक्ट एज माय टारगेट. नाउ आई हैव टू इवेल्युएट रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो. साथ में मैं बैंड्स भी डाल लेता हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी अबाउट बॉलिंगर बैंड्स एंड केएसटी कंबाइंड टुगेदर. अगर मैं बैंड्स डाल रहा हूं यहाँ पे 1 hour टाइम फ्रेम चार्ट पे, आई कैन सी दैट प्राइसेस वेंट अप, took resistance at the mid band. Mid band is nothing but a 20 DMA, 20 डेली मूविंग एवरेज है. वहां रेजिस्टेंस लिया, रिवर्स हो रहा. तो अगर आपको स्कैल्प करना है, स्कैल्प मीन्स फटाफट लिया फटाफट बेचा, अगर आपको स्कैल्प करना है, यू कैन इवन स्कैल्प इट मच अर्ली बिलो दिस लो. सो दिस इज 112,666. 15 मिनट्स पे देखे 112,666 ये लेवल था. तो इसके नीचे अगर 15 मिनट क्लोज कर देता है, then I can enter a position here keeping this high as a stop loss. मतलब stop loss छोटा आएगा and then continue to ride. Once this is breached, the bigger positional sell off can happen until this level, which is 110. This is 1,10,000, so I'm saying 110. So overall Rujan trend on this crypto by combining simple price action methods, looking at KST, combined with Bollinger Bands, you get a very superb way of understanding the market context and also understanding what is the trend. And this is how you have to look at the markets, and this is how you have to trade crypto in a very, very simple fashion. अभी व्यू बन गया, अभी कौन से इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है. ओवर हियर अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, 30 मिनट्स में बाय सेल कर रहे हो, तो यू कैन डू अ स्कैल्पर एक्टिविटी. यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इट्स एक्टिव. सो यहाँ से आपको स्कैल्पिंग में फीस नहीं लगती. दैट्स व्हाट इट शोज. एंड अगर आप पोजिशनल कर रहे हो विच इज मोर देन 30 मिनट्स, देन देयर विल बी सम फीस. सो फ्रॉम हियर यू कैन डू टू थिंग्स. यहां जाके आप फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो, or you can also go to options and select the strike price, and expiry can be 31st October, 30th October, depends what you are looking at. And you can buy put options, that's one, or you can sell call options, out of the money call options also. Now options are very powerful instrument. You need to understand the risk, you need to understand that आपको अगर कोई भी ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, एंड यहां पर जाके आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो. इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एंड थिंग्स, देन नीचे कमेंट में डालिए. आई विल एक्सप्लेन कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है. एंड ये स्क्रोल नीचे हो नहीं रहा है. आई जस्ट चेक, हाँ अब भी हुआ. सो यू कैन स्क्रोल एंड यू कैन चेक द वेरियस स्ट्राइक्स, कॉल्स, पुट्स, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस. सो फिलहाल अगर बिटकॉइन 1,13,000 पे ट्रेड हो रहा है, एंड आई वांट टू सेल कॉल ऑप्शन विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो आई कैन सेल ओटीएम कॉल ऑप्शन. मैं एटीएम या आईटीएम नहीं बेचता हूं. ओटीएम कॉल ऑप्शंस हम बेच सकते हैं. आउट ऑफ द मनी का जो कॉल ऑप्शंस है विच इज गोइंग टू बी अबाव. एंड आईवीज अच्छे हैं, आईवीज आर 40-50. आईवीज अभी फिर भी कम है. इफ यू चेक द आईवीज आर प्रीटी डिसेंट, एंड यू कैन सी द बिड आस्क, यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है आपको एट व्हाट आईवी इट इज. do that, but ensure when you are doing that, have a plan in ready. Or if you want to create strategy by directly doing a futures, you can do that. And you can
create a limit order, best bid, quantity can be as simple as 0.001 Bitcoin आपको बेचना. You can even do that. बहुत easy है, बहुत simple है, and funds required is only this much. That's how you can trade and that's how you can look at it. So overall, in a nutshell, what I'm showing is this can be done by applying simple concepts uh, of technical analysis, which we apply on Nifty, which we apply on Bank Nifty. These all things can be applied here also, and it works. The way it works there, it works here. The only thing is it's overnight. So overnight market है, तो आपको इंश्योर करना है आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए. ओके, नहीं तो डिजास्टर है, बिकॉज इट कैन मूव वेरी फास्ट, इट कैन मूव वेरी क्विकली, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट. तो दोस्तों, ये है एक शॉर्ट वीडियो, मैंने सोचा आपके लिए बनाऊं. और अगर आप इस पे और सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में डालिए. आई विल मेक मोर ऑफ दिस. एंड साथ में नीचे एक हमारा क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना ना भूलना, नीचे लिंक है. डू दैट एंड लेट मी नो इफ इट वर्क फॉर यू. सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड डू इंश्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर लर्निंग. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर आई एम डूइंग हियर इज प्योरली लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव. Do let me know if it's helping you to become a better trader. And we are SEBI registered research analyst. Keep that in mind. An investment in market is risky. So ensure there is no guarantee. Maintain stop loss and trade the process. Follow the process. That is very, very important. Thank you very much for listening me out. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.